सभी फॉर्म छपवा कर और खरीद के सभी व्यवस्था कर ली गई है और सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास उपलब्ध है। वोटर सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था और उसके उपरांत 27 अगस्त 2019 को सेकेंड रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन हो चुका है और इस वोटर लिस्ट के अनुसार हरियाणा में 1,83,00,000 मतदाता इस बार अपने मतदान से तकरीबन 1,60,000 सर्विस वोटर्स है और उसके अतिरिक्त भी क्योंकि continuous updation of electoral rolls is a process which is going भी किया जा सकता है और जो किया भी जा रहा है और जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस डेट तक नए मत बनाए जाने का काम हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स जो कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स भी हैं वो करेंगे। तो मत देने वाले मतदाताओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है चुनाव के सफल निष्पादन के लिए और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के आपसी सहमति से तैयार किया गया एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिस्क्राइब करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और किन के लिए प्रिस्क्राइब करता है। सभी कैंडिडेट्स के लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पार्टी इन पावर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, सबके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक व्यवस्था देता है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के प्रति चुनाव आयोग और चुनाव प्रशासन बहुत ही सख्त है और इस बारे में जिला अधिकारियों को, जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे में क्या करना है। जैसे चुनाव की घोषणा 12 बजे हुई है तो आज सुबह 12 बजे से लेकर कल सुबह 12 बजे तक उनको कुछ गतिविधियां करनी है और इस तरह 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे तीनों की गतिविधियां हैं। तो 24 घंटे में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर जहां कहीं भी कोई पॉलिटिकल बात लिखी हुई है, कोई पॉलिटिकल फंक्शनरीज के फोटो लगे हुए हैं, within first 24 hours complete action has to be taken and we had already asked the commissioners to prepare a list of such violations so that they do not default and within 24 hours all the government buildings are completely cleansed and then for next 48 hours, next 24 hours, the focus will be on public places. मतलब जिन पब्लिक प्लेसेस पर इस प्रकार से कोई नारे लगे हुए हैं, कोई बैनर लगे हुए हैं, कोई भी वो लगा हुआ है
की चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है उसको रिमूव करना है। और फिर उसके बाद में अगले 24 घंटे जितनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के नारे और बैनर्स इत्यादि लगे हुए हैं उनको रिमूव करने का काम करना है। तो मैं आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता को भी सूचित करना चाहता हूं that they will see these actions taking place on the ground. So within 72 hours, the entire violations will be taken care of. 72 घंटों में 3 दिनों के अंदर रिमूवल होगा, 24 घंटे के अंदर सरकारी भवनों से, उसके अगले 24 घंटों के अंदर पब्लिक प्लेसेस से, उसके 24 घंटे के अंदर प्राइवेट। और इस प्रकार से जो ये चुनाव आचार संहिता है, it talks about everything. It talks about misuse of official vehicles. कोई भी मंत्री, एमएलए, कोई भी पदाधिकारी सरकारी वाहन का चुनाव के कार्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। और वो अभी से जिस क्षण चुनाव की घोषणा हुई है उस क्षण से ही वो लागू है, except for going for official work from the residence to the office. If the minister is going from the residence to the office for disposal of official work, that is allowed. Other than that, intermixing of official work and political work is not allowed. That means if you visit some district and you hold an official meeting and you also address a political gathering, that is not allowed. Official vehicles cannot be used for that purpose. And there are things about removal of photographs from and removal of hoardings. Standard operating procedure has been given. Through you, I would like to intimate that obviously there will be some complaints regarding violation of Model Code of Conduct. Now, Election Commission has provided a number of solutions through which the complaint is to be addressed within a prescribed time frame. Now, there is an app called C-Vigil. C-Vigil is an app which you can download, चाहे iOS हो फोन, चाहे आपका एंड्रॉइड फोन हो, और C-Vigil ऐप को आज ही कमीशन द्वारा एक्टिवेट किया जाएगा. It is by tomorrow that app will be active and you can go take the photograph of the violation and send it, and then the receiver, the deputy commissioner, the DEO will get to know from which side this photograph was taken, and within 100 minutes the DEO is supposed to respond and remove that violation and take action as per the law. So C-Vigil is an important tool made by the Election Commission of India, which provides an opportunity to every citizen to report wherever there is a violation of Model Code of Conduct. Second is NGRS, ngrs.com, ngrs.gov.in or com. देखा था ECI Citizen Services. ECI Citizen Services .com, ECI Citizen Services.com. So there is a website on which the complaint can be filed
and that complaint is then properly tracked, and it's a lot of pressure on us to make sure that each one of the complaints filed on the portal is redressed within the given prescribed time limits, and the complainant can also see from internet. He will get a ticket number, and then how the complaint is being processed, what action is being taken. Complainant can see from his own device or his own computer. So this is the main thing. And another important thing is 1950, which you would know is the voter helpline or complaint line. And this line will be functional. It is functional right now, but with the announcement of code, it is to function round the clock. And so if some voter or some citizen dials 1950 from a district, the call will go to the call center within the district. And if one dials from Chandigarh, the call will come to us because we also have a complaint center or call center 1950. Yeah, and this is extremely important that all the citizens of Haryana state remain vigilant and active, और जहाँ भी उनको लगता है और जिला प्रशासन भी पूरा चुस्त और मुस्तैद रहेगा। हम लोग पूरे चुस्त और मुस्तैद हैं। आज हम लोग सभी डिप्टी कमिश्नर्स के, सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस के, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद we are going to do a video conference with them, and we are going to remind them about what is their responsibility for this Utsav, to make sure that the festival gets conducted in the most transparent, most uncontroversial, and most fair manner. That's what we are encouraging. I would also like to, since the huge number of media persons are present over here, I would also like to brief you about the MCMC and the paid news. These are two extremely important elements, and over the years, as the election process in our country becomes more mature, more checks and more balances are being introduced. So MCMC is a media certification and monitoring committee जो district level पर है, which is chaired by the deputy commissioner, state level पर है, which is chaired by me, and then it is at the apex level. It's an appellate system. So any political party, if it wants to release an advertisement to an electronic media, it has to obtain prior approval or prior certification of the advertisement through the MCMC committee. So स्टेट लेवल पर अपील आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कोई कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट लेवल में एप्लीकेशन देता है और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो वो स्टेट लेवल एमसीएमसी कमेटी में अपील फाइल कर सकता है। और अगर स्टेट लेवल एमसीएमसी कमेटी द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे संतोष नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है। बट आई वुड लाइक टू से दैट फ्री सर्टिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा, whatever is issued by political parties on electronic media. Now electronic media not only covers TV channels, it also covers social media.
So if somebody is individually tweeting something, we are not concerned with that. But if the party is tweeting on large number or bulk SMSs are being sent, they need to be certified by the media certification and monitoring committee. So this is important. And then there is a question of paid news. Over the years, this question of paid news has become very, very important. And from our office also, and all the districts have been directed, and the DPR from DPR office also, we will be monitoring पेड न्यूज whatever उसका एक इंक्वायरी करेंगे इंक्वायरी करने के बाद में कमीशन को रिपोर्ट करेंगे और उस मीडिया हाउस के खिलाफ कमीशन will take up with Press Council of India. So I think हमारा जो मीडिया नेटवर्क है जो प्रेस है इट्स क्वाइट मैच्योर प्रेस और इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे जो कि चुनाव के अत्यंत पवित्र गतिविधि को कोई उसके ऊपर कोई उसको लांछन लगे इस प्रकार का कोई काम ना हो और पूरी निष्पक्षता और पूरी पवित्रता और पूरी एथिकल आज सुबह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस बात पर बहुत बल दिया कि we will conduct an ethical election. That is also a new thing coming up, and so paid news has to be avoided. And paid news is simply defined as a news, as an advertisement which is published in the news form, as something which is published for which money has transacted. So this is very simple. So if some money has been received by some media house for publishing a news or for publishing an analysis, then that will be subject to question. And then there are a host of electoral offences candidates will not do criticism of other countries, attack on religious or other communities, obscenity, defamatory, all these things we will be continuously under watch. And we are setting up a control room in our own office, and we are also in the room of public relation department, and we will keep a strict watch. Request to media and political parties is to kindly abstain from such things and let us have a pure and ethical election. And of course, in 2014 Vidhan Sabha elections, we achieved a voter turnout of 76.5%, which is quite ambitious, and we request that we will be conducting campaigns also during this 1 month for increasing the voter turnout, and I'm quite confident that with all that positive activity happening, the voter turnout will go beyond what it was in the last Vidhan Sabha election. And there is income, I forgot about the entire expenditure monitoring element, which is extremely important. Now, we have appointed 24 state level nodal officers for monitoring of expenditure. Now, these people are from the state government as well as from the central government. Starts with income tax department, excise and taxation department, railway protection force, railway department, postal department, and all
possible departments, airport security, all the department, narcotics control bureau, all these people, and we are going to have a meeting with them on Monday because the commission wants that all these organizations should be completely geared up to check the movement of money, liquor, or drugs in the state. So that will be very, that will be cut, and we will be obtaining a daily report, and we will be sending it to commission and monitoring it on regular basis. And so income tax department has given a toll-free number which I would like to announce, which is 1800-180-4815. I will repeat, 1800-180-4815. So this is the toll-free number of income tax department. If anyone finds कि कोई कैश का मूवमेंट हो रहा है या कोई भी इस टाइप की एक्सपेंडिचर से संबंधित कंप्लेंट है तो इस नंबर पे फोन करके उनको सूचित कर सकते हैं और ये लोग तुरंत कार्रवाई करें। So नए वोटर्स आज 21 तारीख है, अगले 6 दिन तक नए वोट बनाने के आवेदन पत्र जमा हो सकते हैं, बिकॉज जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है विड्रॉल ऑफ 7th है, उससे 10 दिन पहले तक नए वोट बनवाने की तो हमने पहले भी अनुरोध किया है, हमने मीडिया में भी प्रेस रिलीज दी है कि देयर इज इलेक्शन कमीशन का एक पोर्टल है nvsp.in, that is National Voters Service Portal, National Voters Service Portal, और इस पोर्टल पर पूरी कंट्री की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की complete voter list available है. So if anyone wants to check whether they are a voter or not, if they are a voter, where is their polling station, and if their family members are voters or not, on this website one can go and check. And if somebody is not a voter, then at least I would say till 26, kindly make an application on Form 6 for who wants to become a voter, it will be facilitated. मेरे विचार में तो हमने पर्याप्त सर ये डिफेसमेंट को लेके हर चुनाव में होती है, लेकिन इतना सख्ती से लागू नहीं होता, इस दफा कोई तो बिल्कुल सख्ती से लागू करने के क्या किया, मतलब क्या ये बिल्कुल देखो, ये तो डिफेसमेंट इज क्वाइट क्लियर, हरियाणा में हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर एक लोगों के अंदर इस बात को लेकर संशय रहता है कि मेरा घर है और मैं मेरी अनुमति से उसके ऊपर कोई बैनर लगवाना है या उसके ऊपर कोई नारे लिखवाने हैं, मेरी अनुमति से लग सकता है। पर ये बिल्कुल क्लियर है that Haryana Defacement of Property Act does not allow any banner, any slogan, any wall painting to be written on private houses with or without permission. So we are going to issue clear directions. We have issued clear directions in writing. This time we are going to issue clear directions
orally also in the video conference. And then I have told you there are certain portals, there are certain independent complaint systems, and that can be used अगर कहीं पर लिखा हुआ मिलता है. सर जो आपने कहा है सोशल मीडिया में क्या व्हाट्सएप ग्रुप पे भी नजर रखी जाएगी. दूसरा जो आपने हर जिले में 2 एक्सपेंडिचर वाले पर्यवेक्षक लगाए हैं तो बाकी जो चीजों की मॉनिटरिंग है क्या यही लोग करेंगे? नहीं ऑब्जर्वर्स का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है और हर जिले में इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे. उनका काम एक्सपेंडिचर के मॉनिटरिंग होगा. कैंडिडेट्स अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करेंगे और उसके अलावा देयर विल बी टीम्स, stationary teams, there will be mobile teams, there will be, there will be video surveillance teams, there will be video viewing teams. जो वीडियो सर्वेलेंस टीम्स वीडियो बना के लाएंगे उस वीडियो को कोई देखेगा. So there will be all kind of monitoring and any expenditure which is found to be of a particular candidate will be added into the account of that particular candidate by the expenditure observer. So expenditure observer is separate. There will be 3 kind of observers in each constituency which will be coming in due course of time. One is the expenditure observer in each constituency. नहीं हो तो 2 constituency पर because it's a Vidhan Sabha election. So expenditure observers, general observers and police observers. There will be police observers, expenditure observers and general observers. Expenditure observers will focus on expenditure element और जितना कहीं पर लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर कैश का डिस्ट्रीब्यूशन है, उस सब को रोकना एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर का काम. सब ऑब्जर्वर्स विल वर्क एज ए टीम. कंपनीज मंगाई गई हैं फोर्स में we have asked for 200 companies. We have had interactions with the Election Commission and the Home Ministry. Both we have requested आज मुख्य चुनाव आयोग भी अपनी उसमें कह रहे थे कि वो अभी तक नंबर नहीं आया है, but they will try their best to give us more companies than in the last Vidhan Sabha elections. Let's see, but we will make full effort. सर मेरा सवाल है, पुराने एक्सपीरियंस है कि पोस्टल बैलेट के कारण काउंटिंग बहुत डिले होती है. इस बार ये सिचुएशन ना आए, ये इस बार पूरा प्रयास है बिकॉज पिछले चुनाव में जो ये पोस्टल बैलेट, देवर न्यू कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड called electronically transmitted postal ballot system. It is ETPBS, and in fact the system was introduced for quick counting of, but because the counting was taking all over the country and postal ballot papers were counted simultaneously, so those machines could not count, a server could not connect, and then manual counting was done. But Election Commission has taken steps on upgrading their servers, and also this time, since the election is in 2 states only, ETPBS is likely to work, will work. सर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो अभी भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस में किए हुए हैं. आज भी हरियाणा में एग्जाम हो रहा है, कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है. इसके अलावा जो है वो रिजल्ट जिन चुनाव के दौरान बीच में जारी किया गया था, तो क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को एग्जाम ले सकता है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है वो सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रख सकता है.
there is no restriction on that. Both Public Service Commission and Staff Selection Commission, they can conduct exams, they can conduct interviews, they can process the results. There is no restriction on that. Sir, प्रक्रिया did लगी did we recognize? declare कर Sir, declare भी कर सकते हैं। रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करते। रिजल्ट डिक्लेयर करने पर एक सर ईवीएम वगैरह का जो वीवीपैट ईवीएम की संख्या होगी और वगैरह का संवेदनशील के बाद मतदान केंद्र 19,400 हमारे पास कुल मिलाकर 19,442 मतदान केंद्र हैं और वीवीपैट हाँ 19,442 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 5,511 अर्बन एरिया में है, 13,931 रूरल एरिया में है और 10,288 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है। मतलब एक बिल्डिंग में कई बार एक स्कूल में एक लोकेशन में 2 या 3 पोलिंग स्टेशन होते हैं, तो 19,288 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है और 19,442 पोलिंग स्टेशन है। इसके अतिरिक्त जहाँ पर मतदाताओं की संख्या 1,500 से ज्यादा है आफ्टर द सेटिंग सेपरेट, उन पोलिंग स्टेशन का ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाने की हमने रिक्वेस्ट की है कमीशन को, तो वो संख्या 136 है। ओवर एंड अबव 19,442 पोलिंग स्टेशन और यूनियन का हमारे पास वर्तमान में 26,329 कंट्रोल यूनिट है और 40,615 बैलेट यूनिट है। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अगर 16 से ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी of the state, we will be able to provide enough ballot units, and we have got 27,996 VVPAT, and so there is enough. 27,996 VVPAT। और एक और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी देने के लिए और उसके ऊपर हैंड्स ऑन देखने के लिए हर गांव में, हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन में we are preparing mobile vans, and within this period of 1 month, mobile vans with EVMs, VVPATs will visit every village of the state by informing them in advance, and they will conduct mock poll to the citizens. They will display the results to them, so that there is comfort with EVM VVPATs in the voter. They are able to vote. Sir, did we recognize any set of violations which will result in the cancellation of candidature? And second one is, sir, have you made any particular rules for ambulance use? उसमें जिस तरह कई बार इलेक्शन के दौरान कैश ले जाते हैं या पकड़े जाते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर साथ में टीम जाएगी या क्या रहेगी? या कितना कैश लेके जा सकते हैं? कैश लेकर जाने वाला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सीलिंग 10 लाख रुपए है। 10 लाख
अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश कोई लेकर जाता है तो वो कैश के ऊपर तुरंत एक टीम बनाई है, वो उस व्यक्ति से पूछताछ करेगी और कैश की जेन्युइननेस और अदरवाइज वेरीफाई करेगी। 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉल अगर बैंक अकाउंट से कोई करता है तो उसकी रिपोर्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से, बैंक के अधिकारियों के माध्यम से इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर को दी जाएगी और वो उसके ऊपर जांच करेंगे। और कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको बताया कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कानून है और 10 लाख से ज्यादा की राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से